आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में मैं विनोदानंद झा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नवरात्रि के इस महान पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हमारे जीवन को सफल और साकार बनाते हुए हमारी समस्त मनोकामना पूर्ण करती है। मेरे पिता स्वर्गीय पंडित परमानंद झा द्वारा वर्ष 1995 में श्री दुर्गा सप्तशती पाठ की रिकॉर्डिंग में से अर्गला, कील और कवच स्रोत और 13 अध्याय अलग अलग कड़ियों में जगत जननी के श्री चरणों में सादर समर्पित हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसका लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। नमस्कार। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति पुष्पाण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। समाप्तः। अथ एकादशोऽध्यायः। ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे तेन्द्रासुरा वह्निपुरोगमास्ताम् कात्यायनीं तुस्तु दुरिष्टलाभात् विकासि वक्राब्ज विकासि साता। देवावुषु देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण जतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वैकदाप्यायते कृष्णमलङ्घवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तास्तव देवि भेदा त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वैकया पूरितमम्ब एतत्काते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतेका वा भवन्तु परमोक्तया सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्वोपरितोषक्ति नारायण नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते हंस युक्त समविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्भक्षरिके देवी नारायणि नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणि नमोस्तुते शंखचक्रगदासाङ्गगृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे तं श्रोधित वसुन्धरे वाराह रूपिणि शिवे नारायणि नमोस्तुते नृसिंह रूपेण उग्रेण हन्तुं दैत्यान्धकृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणि नमोस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रः प्राण हरे चैन्द्रि नारायण नमोस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणि नमोस्तुते दंष्ट्राकरालपदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिसुधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोस्तुते मेधे सरस्वती बरे भूतिवा भ्रमितामसि नियते तुम प्रसीदेते नारायणि नमोस्तुते सर्वतः प्राणिपालान्ते सर्वतोक्षिशिरोमुखे सर्वतः श्रवणघ्राणे नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं वासुनः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते हिनक्ति दैत्यतेजांसुतेन स्वनेन पूजिता जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानिव असुराश्रिवशापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वल शुभाय खड्गो भवतु तण्डिके त्वां दतावयम्
रोगान शेषान्नपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कथनं त्वयाद्य भ्रमद्दिशां देवि महासुराणां रूपैरणेकैर्बहुधातु मूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या मम त्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयत्येतदति विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयो दस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथापि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपाहि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपाहि विश्वं विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाजे त्वयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय लोरिभीते नित्यं यथा सुरबधारो नैव सद्या पापानि सर्वजगतां प्रशमन्नया सूत्पात पाकजनितां च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वाद्यहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदाहव दिववाद वरदाहं सुरकरा परं जनमनसेक्षत तं प्रणुद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवावचो सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमसुमद्वैर्विनाशनं देववाच अस्वतेऽन्तरे प्राप्त्यष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भस्यैवान्यापुत्पत्स्येते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तो न शिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्रतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्णयिष्यामि बेप्रचित्तान् सुदानवान् भक्ष्यन्त्याश्रितानुग्रान् बेप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दारिणी कुसुमोपमा ततो मां देवता सर्वे मर्त्यलोके च मानवा स्तुवन्तो व्याहनिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च सत्वासित्यामनाभृष्यामनं भजे मुनिः संस्तुता भूमो सम्भविष्याम योनिजा ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तिष्यन्ति च मनुजाः सता क्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवे भरिष्यां सुराष्ट्राकेरावृष्टे प्राणधारके शाकम्भरीति विख्यातिं तदा जास्यामहं भुवे तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मेनां भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षिष्यामि मुनीनां प्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तुत्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मेनां भविष्यति यदा रुणाख्यस्त्रैलोक्ये महावाघां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्ये खट्पदं त्रैलोक्यसहितार्थाय वधिष्यामि महासुरं भ्रामरीज्यमां लोकाः सदा स्तुत्यन्ति सर्वदा इत्थं यदा यदा बाधादानबोधा भविष्यति तदावतीर्जाहं करिष्याम्यरिसंशयम्। श्री मार्कंडेय पुराणे सावरण के मन्वंतरे देवी महात्म्य नारायणी स्तुतिः। एकादशोऽध्यायः समाप्तः। अथ द्वादशोऽध्यायः देव्युवाच एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते च समाहितः तस्याहं सकलां बाधां प्रमेष्याम्यसंशयं मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं ये तत्पदं शुम्भनिशुम्भयो अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं नो तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानजापदा भविष्यति न दारिद्र्यं नो चैवेष्ट वियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दर्शितो बालराजसः नो शस्त्रानलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान् ममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्यैनं महत् उपसर्गान् शेषां तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं समेन मम यत्रेतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतच्चैतमुच्चार्जं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या बलिहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते जातवार्षिके तस्यां ममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते नृपः पुमान् रिपवः संशयं नान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृणुतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु उग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गासं जानति ग्रहपीडासु दारुणा दुःस्वप्नं च हृदृष्टं सुस्वप्नमहद्मुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघातभेदेतॄणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पट्पुष्पार्घधूपे च गन्धदीपे तथोत्तमे विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणीयैरर्निशम्
अन्यैश्च विविधैर्भोगे प्रदानैर्वत्सरेजा प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत्सु द्वैते श्रुते श्रुतं हरति पापान् तथा रोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धे सुजयितं जन्मे दुष्टरीति निवर्णनं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां जायते युष्माभिस्तुतियोजाश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृता ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वा विदावाग्निपरिवारितः दशभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वा शत्रुभिः सिंहदाघ्राण जातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन वा ज्ञप्तो बद्धो बन्धगतो विवा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत संकदा मम प्रभावा सिंहाद्यातस्य भुवेन तथा दूरादे पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋजुर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयत तेऽपि देवालय आतङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागुलः सर्वे चक्रुर्विनिदारया दैत्यास्य देव्याभिः ते शुम्भे देवरूपो युधे जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोगे तुल्यविक्रमे शुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालपायुः एवं भगवती देवी सारित्यादि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपो जगतः परिपालनं तैतन्मोजते विश्वं सेवि विश्वं प्रसूयते सा जाचिता च विज्ञानं तुष्टारिथिं प्रेक्षते व्याप्तं तैतं तत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा यस्मिन् करोति भूतानां सैव काली सनातनीं भवकालेन नाम सैव लक्ष्मीर्विद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशाय उपजायते सुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिः तथा ददाति वित्तं पुत्रांश मतिं धर्मे तथा शुभम् मार्कण्डेय पुराणे सावरण के मन्वन्तरे देवी महात्म्य देवी वाक्यम् द्वादशोऽध्यायः समाप्तः अथ त्रयोदशोऽध्यायः ऋषिरुवाच एतत्ते कृतं राजन् देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी जदेदन्धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद् विष्णुमाया तया त्वमेषु वेश्यस्य तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहितास्यैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधितास्यैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा पुरुषः स्वनराधिपः पणिपतिः महाभागं तं ऋषिं संशितव्रतं निर्मीणोति ममत्वेन राज्याभरणेन जगां सद्यस्तप्ते च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदी पूर्णिन संस्थितः स्वजोवेश्य तपस्तेऽपि देवी सूक्तं परं जनं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां च कृतोस्तस्याः पुष्पधूपाग्निकर्पणे निराहारो जताहारो तन्मनस्को समाहितो दद्दुस्तौ बलिं चैव निजगात्रात्रिगुक्षितम् एवं सुमाराधयतो स्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राचण्डिका देवात् यत् प्रार्थ्यते त्वया भूपो त्वया च कुलनन्दन मत्तप्रार्थितां सर्वं परितुष्टा ददामि ते मार्कण्डेयात् ततो बभ्रे नृपो राज्यम् अभ्यभ्यन्यजन्मने अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुः बलं बलात् सोऽपि वेत्त ततो ज्ञानं बभ्रेन्द्रवीर्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतकारकं देवात् स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतस्य भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवा विवस्वतः सावर्णिको मनुर्नामो भवान् भूः भविष्यति वैश्यवर्जिते आजस्य वर्षुमत्तोऽभिवाञ्छितः करं प्रयच्छामि संसिद्धे तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेयात् इति दत्त्वा तयोर्देवी यथा विलसितं वरम् तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं सपदि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्पदनुसरणं क्लेशहरणं विधेराज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतच्छन्दव्यं जननि सकलोद्धारे शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलसरलोऽयं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति
जगन्मातर्मातस्तव चरण सेवा न रचिता नवादत्तं देवे द्रविणमति भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्त्वा देवान् विविध विधि सेवा कुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु भयति इदानीं केन्माता तव जरि कृपानापि भविता निरालम्बो लम्बो दरजननिकं जामि शरणम् क्षपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरङ्कोटि कनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधो चिताभस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपते कपाले भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाति फलमिदम् न मोक्षस्याकाङ्क्षा न च विभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा सतिमुखि सुखेच्छापि न पुनः अतः स्वां सञ्जाते जननि जननं जातु मम वै मृडानि रौद्राणि शिव शिव भवानीति जपत नाराधिताति विधिना विविधोपचारे किं रोक्षचिन्तन परेण च तं वचोभे श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे धत्ते कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपत्सु मगनस्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवे शिवे नैतच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परम्परावृतं नहि माता समुपेक्षते सुतं मत्तमः पातकीनासि पापग्नि त्वत्समानहे एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु दुर्गे स्मृता हरति भीतिमशेष जन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता नमः भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवापरं बलम् त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं शिवे।